अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को देख रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके The solid connectors including data as well as the process flow between two components as the two components. Please note that the inner working of the database management system are quite complex and we cannot attempting to provide a detailed discussion of its implementation. अच्छा अपने माइंड में ये बात रख लें, नोट कर लें कि जो इनर वर्किंग है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि उसकी डिटेल डिस्कशन करें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. For an in-depth treatment, the readers should refer to one of the many excellent database books, example 3, 4, 9, 10. Starting from the top, users interact with the database via command generated from a variety of the users interfaces application program. अगर हम टॉप से शुरू करें जो कि इधर दिखाया गया है, तो जो यूजर्स और एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ वेयर कमांड जनरेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द यूजर इन्फिनिट एप्लीकेशंस. इंटरफेरेंस और एप्लीकेंट्स की कमांड के जरिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं. दीज कमांड्स कैन either retrieve or update the data that is managed by the database management system or create or update the underlying metadata that describe the schema of the data. The former are called the queries, the latter are called the data definition systems. अच्छा, जो ये कमांड्स हैं वो रिट्राइव भी हो सकती है और डाटा को अपडेट भी कर सकती है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट के ज़रिए मैनेज की जाती है, और या फिर ये इसको क्रिएट या अपडेट कर सकती है अंडरलाइंग मेटा डाटा को, जो कि डिस्क्राइब करता है स्कैम ऑफ द डाटा डाटा की स्कैम को. और इस फॉर्मर को हम कहते हैं क्यूरीज, और जो लेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट. Both type of the commands are processed by the query evaluation engine, which contains some modules for parsing the input, producing an execution plan, and execution the plan against the underlying database. अब ये जो दोनों types of commands होती हैं वो process की जाती हैं जो query evaluation engine के ज़रिए, जो कि जो मुश्तमिल होता है सब modules पे for parsing the inputs, producing and execution plans, जो कि inputs को पैराइज करता है, execution plans बनाता है, and execution the plans against the underlying database. In the case of the queries, the parest command is presented to a query optimizer submodule which uses information about how the data is stored to produce an efficient execution plan for the possibly many alternatives. An execution plan is a set of the instruction for evaluating an input command, usually represent as a tree of the relational operation. We discuss data structures that are used to represent pairs trees, query evaluation plans, external sorting and histogram in the section 60.2 when we focus on the query evaluation engine. अब हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर बेस को जो यूज़ किया जाता है पार्स ट्रीज को रिप्रेजेंट करने में, क्यूरी एवोल्यूशन प्लान्स को रिप्रेजेंट करने में, एक्सटर्नल स्टोरिंग और हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने में. Since the database are normally too large to fit into the main memory of the computer, the data of the database resides in the secondary memory, generally on one or more magnetic disk. अब डेटाबेस जो होता है वो बहुत लार्ज साइज़ का होता है, वो मेन मेमोरी में फिट नहीं हो सकता कंप्यूटर की, तो जो डेटाबेस होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, जो जनरली एक या एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क पे होता है. However, to execute queries or modification of the data must first be transferred to main memory for producing and the back to the disk for precedent storage. It's the job of the storage subsystem to accomplish sophisticated placement of the disk data on disk to assure an efficient localization of the precedent data to enable their bidirectional transfer between disk and the main memory. अच्छा, ये जो स्टोरेज सब सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोफिस्टिकेटेड प्लेसमेंट ऑफ द डाटा डिस्क पे जो होता है, सोफिस्टिकेटेड प्लेसमेंट डाटा को जो हमने प्लेस करना होता है उसके अकॉम्प्लिश के लिए टू श्योर एंड एफिशिएंट लोकलाइजेशन ऑफ दिस प्रेसिडेंट डाटा, इसको श्योर करना होता है कि वो अपनी मेन लोकलाइज हो चुके हैं डाटा टू एनेबल देयर बाई डायरेक्शनल ट्रांसफ़र, उसकी बाई डायरेक्शनल ट्रांसफ़र को अनेबल करना डिस्क और मेमोरी मेन मेमोरी के दरमियान, और एंड अलाउ द डायरेक्ट एक्सेस टू दीज डाटा फ्रॉम द हायर database management system architecture levels. It consists of the two components.
the disk space manager, and the buffer manager. I hope you will understand the topic. Thank you.